two crucial votings, elections taking place at the moment in Punjab. All the seats there up for grabs. It's a third phase of polling in UP. Let's begin with an overall picture. 59 constituencies spread across 16 districts in UP will be today casting their votes. This is a make or break phase for Samajwadi Party. If they want to form government, they have to score big in this phase. Meanwhile, Punjab also voting, the border state which has seen a very high voltage political drama recently, and in the last leg of campaigning, till the last day in fact, FIRs being filed and complaints being filed against leaders for violating model code of conduct, their agenda also leaning towards religious identity and separatism that we've seen all morning. Leaders, all of them have been coming in to cast their votes. On your screens right now, Navjot Singh Sidhu. But let's look at Punjab first in a bit of detail. And in 2017, the Congress had ended up the SED-BJP combined 10-year regime by bagging about 77 seats. It was a huge upset for Aam Aadmi Party, which had hoped to do big. This time around, will things change? Also, this time, a very interesting pool and, musical chairs really happening between parties there. BJP contesting alone and separately from SAD, but they are now in alliance with the party which has been floated by Captain Amrinder Singh, who was very unceremoniously removed as a chief minister. He quit Congress and then floated his own party, now fighting elections with the BJP. So lots of permutation combinations at place as Punjab votes. Let's look at the latest voting percentage that has come in since morning. Punjab has been voting from about 8 o'clock in the morning, and let's try and get you the latest polling percentage that has happened. The turnout at the moment is about 4.8%, which is this is until 9 a.m. So just about in 1 hour, it was about 4.8% compared to 8%, which was last time around. So not a very impressive number coming in just yet, but this is a number that will keep evolving. Too early to really comment or draw any conclusions out of those turnout percentages. पंजाब का भला हो, पंजाब की तरक्की हो, पंजाब में आने वाली सरकार बहुत अच्छी बने। आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है। हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश की है। अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेगा। यही अपील करूंगा, विनती करूंगा कि जो वोटर कार्ड है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, उनके जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें ये वोटर कार्ड लेके दिया है। इसको किसी लालच में या किसी दबाव में आकर किसी को पकड़ाना नहीं है। अपनी मर्जी से वोट करो, जिसको मर्जी वोट करो। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। भगवान अपने आप अच्छा ही करता है जो अच्छे लोग होते हैं। भगवान से यही गुजारिश की है कि चाहते हैं कि मोगा शहर का भला हो, और वो तभी होगा जब सब लोग सपोर्ट और वोट करेंगे आज मालविका सूद को। देखो, इनको सोचकर बदलाव लाना चाहिए। बदलाव हर वक्त आता है जी। चाहे ट्रेडिशनल पार्टी हो, कोई भी हो, बदलती है जी, तो बदलाव आता है, पर बदलाव सोचकर करना चाहिए कि आपका आगे बच्चों का, आपका यूथ का क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है। एक तरफ वो माफिया है प्रकाश सिंह बादल के परिवार का और कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार का, जिन्होंने पंजाब की कॉस्ट पे निजी स्वार्थों से बंधे होकर अपने बिजनेस चलाए। दूसरी तरफ उस सिस्टम को बदलने की चाह वाले, पंजाब को इश्क करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में बहुत सोच समझकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए है। पंजाब में वोटिंग शुरू हो गई है, और वोटिंग शुरू होते ही जो बताने वाली बात मुझे लग रही है, मैं मोहाली में हूं, वो ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सबसे पहले जो है वोट डालने के लिए निकल के आए हैं। होना ये चाहता कि यूथ जो है वो बड़ी संख्या में दिखाई दे, लेकिन यहाँ सीनियर सिटीजन जो है वो सबसे पहले लाइन में लगते नजर आए हैं। सत श्री अकाल जी, ਤੁਹਾਡਾ नाम दस दो जी। जनमीत सिंह।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਥੌਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ हल करे। और ये देखिए जैसे कि हम हर चुनाव में दिखाते हैं कि किस तरह से और कितनी मुश्किल से लोग जो हैं वो वोट डालने आ रहे हैं। इसी तरह से माता जी आ रही हैं। माता जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਚੰਨਣ ਕੌਰ। कितनी उम्र हो गई ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 80 ਤੋਂ 3 83। अच्छा 83 ਹੈ। 83। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਹੈ ਭਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ठीक है। चीजां भी सस्तियां हो जान, सारा चीज सस्ती हो जाए, ठीक है बढ़िया। ठीक है। तो 83 साल की साडी बेबे वोट पा रही हैं, हमारी माता जी जो है वोट डाल रही हैं। तो ऐसे तस्वीरें हम चुनाव में हमेशा इसलिए दिखाते हैं कि जो लोग घर में बैठे हैं उनमें एक हिम्मत आए और जो है वो वोट डालने के लिए जाएं। पिछली बार पंजाब में अच्छी वोटिंग हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिछली बार पंजाब में अच्छी वोटिंग हुई थी और इस बार भी उम्मीद करते हैं कुछ इस तरह की वोटिंग होती दिखाई दे। मोहाली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया। From Punjab, let's cut across to UP now, where Akhilesh Yadav is out voting and he had a few words for the press as well. Let's listen in. क्या हाल है? अभी सबसे बात हो जाएगी। तुम कहाँ घुस गए फिरे? तुम हट जाओ। भैया बताओ भैया कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा आप बताओ। और चाचा ये क्या कर रहे हो भाई? मेरे हाथ तो पीछे हो जाओ, सबसे बात कर लीजिए। All right, so there some confusion, as is sometimes the case. A lot of attention as Akhilesh Yadav along with his wife Dimple goes into vote. Remember, the entire Yadav clan is voting in their stronghold, with a little twist in the story this time around. Last election, there seemed to be a divide within the uncles and the young generation of the Yadav clan. This time, they're all united in one front, except that Aparna Yadav has now switched sides and joined the BJP. So it's an interesting fight that's unfolding in UP at the moment. Also, it is an important election for this man himself. Lots at stake for the Samajwadi Party in this phase, in this overall election. Also something that has propelled him to fight state elections for the first time. Akhilesh Yadav, this is his maiden fight for assembly polls. He always fights as a Lok Sabha MP and hopes to find a place for himself in the Union Parliament. But this time around, fighting elections for assembly. Now, all eyes are on that Karhal seat, which is said to be a Yadav stronghold, Mainpuri area as well, where Akhilesh Yadav is contesting for from the first time. He's up against a union minister who has been fielded from the BJP. His name is SP Singh Baghel. It's a stronghold for SP in most ways. They've only lost it once since the inception of the party in 92. Apart from that, if you look at this entire third phase of voting, you see about in 2017, BJP got 49 of these 59 seats. So how it unfolds will be interesting to watch out for.